श्रीगणेशाय नमः। पुष्पदन्त उवाच महिम्नः पारं ते परमविदुषो यदृशदसि स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः यथा वाच्य सर्वस्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममाप्येषस्तोत्रे परनिरपवाद परिकर अतीतपन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयो रतव्याव्याप्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सतस्य स्तोतव्य कतिविधगुणकस्य विषय परेतर्वाचीरे पतति न मनकस्य न वच मधुस्फीरावाच परममृतं निर्मितवत स्तव ब्रह्मन् किं वादपि सुरगुरो विस्मयपदं मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपूर्णेन भवत पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं जगदुदय रक्षा प्रलयकृत् त्रयीवस्तु व्यस्तं विशुषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणि विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधत इह के जडधिय किमिह किं कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादानमिति च अतस्तेश्वर्ये त्वय्यनवसरदुस्तो हतधिय कुतर्कोऽयं कांश्चिन्मुखरयति मोहाय जगत अजन्मानो लोका किमवयववन्तोऽपि जगता अधिष्ठातारं किं भवविधिरनागत्य भवति अनीशो वा कुर्याद् भुवनजनरेखः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवरसंशेरत इमे त्रयी साङ्ख्यं योग पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमधपर्त्यमिति च रुचीनां वैचित्र्याद्रजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णमयिव महोषखट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनं कपालं चेति यत् तव भरततन्त्रोपकरणं दुरास्तां तां वृत्तिं तदपि तु भवद्भूप्रनिहितं न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति पूर्वं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं करोद्रोव्याद्रोवे जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् गुणमथनभेदे स्मृत इव सुवञ्जीवेऽपि त्वं न खलु ननु दृष्टा मुखगता तवैश्वर्यं यदुपरि विरञ्चिर्हरिरथ परिच्छेतुं याता वनरमनरस्कन्दवपुष ततो भक्ति श्रद्धा परगुरुगुणज्ञां गिरिशय स्वयं तस्ते ताभ्यां तव किमनुवृत्तेन फलति भयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं दशास्यो यद्बाहुं नभकरणकण्डूपरवशा शिरपद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबरे शिरा
सहायास्मद्भक्ते त्रिपुरहर विस्फूर्जितविधम् मामुष्य तत्सेवा समधिगतसारम् भुजवनम् परात्रैरासेति परदिवसतो विक्रमयत अलभ्यापाताले जलसचलिताङ्गुष्ठ शिरसि प्रतिष्ठात्वय्यासि ध्रुवमुपचितो मूयति खल जगद्विंसुत्राम्नो वरद परमोच्चैरपि सति मनश्चक्रे बाण परिजन विधेयस्त्रिभुवन न तच्चित्त्वम् तस्मिन् परिवसितरीत्वच्चरणयोर्नकस्या उन्नत्ते भवति शिरसत्वय्यवनति अकाण्ड ब्रह्माण्ड क्षयचकित देवासुरकृपा विधेयस्या सिद्ध्य श्रीनयन विषं संवृतवत सकल्माश कण्ठे श्रवण कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभङ्ग व्यसनिन असिद्धार्थादेव क्वचिदपि स देवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखा शतशन्निशत्वा वितरसुरसाधारणमभु स्मरस्मर्तव्यात्मा न हि वशिषुपत्य परिभव महीपादाघात प्रजति सहसा संशयकरम् पदं विष्णुर्धाम्य भुज परिघरुग्रह ग्रहगणम् मूर्त्यौ स्तम्भ्य कनिभृत जटा ताडित तथा जगद्रक्षायेकं नटसि ननु मामेव विभुता यद्व्यापीतारा गणगुणितफेनोद्गमरुचि सर्वावोहाराम्य कृशतलघुद्रष्ट शिरसि ते जगद्वीपाकारं जलविवलयं तेन कृतवि जनेनैवोन्नेयं धृतमहिमदिव्यं तव वपुः रथक्षोणीयन्ता शतधृतिरदेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्रार्को रथचरणपाणि शर इति विदक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधि विधेये क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्रा प्रभुधिय हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमादाय पदयो जये कोणे तस्मिन् निजमुदहरं नेत्रकमलं गतो भक्त्युदेक परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगतां ततो सुप्ते जागृत् त्वमसि फलयोगे क्रतुमतां स्वकर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनकृते ततस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिभुवं श्रुतो श्रद्धां बद्ध्वा कृतपरिकरः कर्म सुजन धिया रक्षो रक्ष क्रतुपतिरधीशस्तनुभृता ऋषीणामाद्विज्यं शरणदसदस्यासुरगणा क्रतुभैषस्त्वत्त क्रतुफलविधानो व्यसनिनो ध्रुवं कर्तु श्रद्धा विदुरमभिचाराय हिमका न जानाथं नाथ प्रसवमभिकं स्वां दुरितरं कथं रोहिभूता वीरमयि सुमुष्यस्य वपुषा अनुष्ठाने यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं प्रसङ्गं वेद्यापि त्यजति न मृगव्याघरभस स्वलावण्या शंस कृतधनुषमह्नाय पुरं पुष्टं दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि प्रतिष्ठेनं देवी यमनिरतदेहार्थघटना सवेति त्वां मत्त पदवरदमुखायुवतय श्मशानेष्वाक्रीडा स्मरहरतिष्ठाता समसरा भस्मालेक जगति नृपयोगी परिकर ममाङ्गल्यं
तव भवतु नामेवमखिलं तथापि स्मर्तूणं वरद परमं मङ्गलमसि मनः प्रत्यक्षीते सविधमवधायान्तमरुत प्ररुष्टद्रोमाण कवरसलिलो संहितदश यदालोक्याराधं हृदयिव निमज्जामृतमये तदत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तखिल भवा समर्थस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः स्वमापस्त्वं व्योम त्वमुधरणीयात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नावेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरं प्रविघ्नस्तत्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि त्रयीन्द्रिष्टो वृत्ति त्रिभुवनमतोऽपि नपि सुरा प्रपारादे वर्णे त्रिविरविरधत्तीर्ण विकृति तुरीयं ते धाम वनिभिरवरुन्धानमणुभिः समस्तं यस्तं त्वं शरणजगृणात्योमिति पदं भव शर्वो रुद्र पशुपतिरथो ग्रहसहमः तथा भीमेशान इति यदभिधानाष्टकमिदं अमुष्मि प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि क्रियायास्मे धाम्ने त्वनित्यमस्योऽस्ति भवति नमो वेदिष्ठाय प्रियदवदभिष्ठाय च नमो नमोक्षोदिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय स्त्रीनयनयविष्ठाय च नमो नमः सर्वस्वीति सर्वमति सर्वाय च नमो भवरश्री विश्वोत्पत्तो भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुरकुले सत्त्वोद्रिक्तो मृडाय नमो नमः प्रवहसि पदे निष्ठे गुण्ये शिवाय नमो नमः कृशपरिणतिचेत क्लेशवश्यपचेदं क्वच तव गुणसीमो लङ्घिनी शश्वदृष्टि इति चकितमन्दीकृत्य मां भक्तिरादात् वरद चरणयोस्ते वाक्पुष्पोपहारम् असितगिरिसमं स्यात् कज्जलमसि सिन्धुपात्रे सुरतरुहरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी लिखति अधिगृहीत्वा शारदा सर्वकालम् तदभिगुणानाम् ईशपारं न याति असुरसुरमुनिन्दे गर्जितसिन्धुमूले घटितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगणवरिष्ठ पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमदभूते स्तोत्रमेतच्चकार आहरहरनाद्यं दुर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्य स भवति शिवलोके रुद्रतुल्य सदात्र प्रचुरतरधनायु पुत्रवान् कीर्तिमांश्च महेशान्नः परो देवो महिम्नो नापरास्तुतिः अघोरान्ना परो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरो परम् दीक्षादानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिगाक्रिया महिम्नस्तव पादस्य कलां नार्हन्ति षोडशीं कुसुमदशनामा सर्वगन्धर्वराज शशिधरवरमौले देवदेवस्य दास सकलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवासरोषात् स्तवनमिदमकाशि दिव्यं महिम्न सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुम् पठति यदि मनुष्य प्राजलीनान्यचेता व्रजति शिवसमीपं किन्नरे स्तूयमानः स्तवनमिदमोघं पुष्पदन्तप्रणीतम् आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम् अनुपम्यं मनोहारी शिवमीश्वरवर्णनम् इत्येषा मयि पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेश प्रीयतां मे सदाशिव तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नर सर्वपाप विनिर्मुक्त शिवलोके महीयते श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण
कंठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेश इति श्रीपुष्पदन्तविरचितं श्रीमहिम्नस्तोत्रं सम्पूर्णम्।